स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Ali Sher, and I am going to present private and public equity along with the advantages and disadvantages with my group members. So let's get started. Next slide, please. Here are my group members, including Umair Ali, Birbal, Bali Javed. So let's firstly start with the private equity. Private equity are basically the equities or the firms where the investment are made in privately held companies. These are the companies which are not listed in stock market, unlike the public firms which are traded in the stock market. And the investment made in the private equity are done by the private firms, and these investment are carried out by the high net worth individuals which invest a bulk of capital or a large amount of capital in these companies. Next slide. Here are some advantages of doing investment in private equity. Number one is high returns potential. By investing in the private equity firms, the investors gain a high returns potential. The reason is that the private equity firms actively manage their portfolio companies and implement the strategic decisions to drive growth and profitability. Number two, long-term focus. Private equity firms typically have a long-term investment horizon, which allows them to focus on value creation and the strategic decision making without being, you can say, like driven by the short-term market pressures. That's why the investors gain high returns. The next one is control and influence. Private equity investors usually acquire significant ownership stake in the companies in which they invest. That's why they gain a huge or a greater control and influence over the strategic decisions. This control allows private equity firms to drive changes and implement their investment strategies effectively. So that's all from my side. So next topic will be discussed by Umair Ali. Hello, my name is Umair Ali Khan and I will explain the disadvantages of private equity. The first one is liquidity. Liquidity means how quickly a person can convert his or her assets into cash. So generally in private equity, they invest their money for like a long period of time, for 5 to 10 years. और उसमें मोस्टली जो है वो कुछ लोगों तक वो महदूद होती है 5 to 10 years तक. वो इन्वेस्टमेंट का जो मिनिमम टाइम है वो 5 to 10 years है. और सेकंड है हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट. जब भी कोई फर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई ना कोई कैपिटल हमें चाहिए होता है. तो प्राइवेट इक्विटी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई इन्वेस्टमेंट उसकी रिक्वायरमेंट है. तो ये भी उसका एक डिसएडवांटेज है. द थर्ड वन इज हायर रिस्क. जो प्राइवेट इक्विटी है वो तकरीबन ज़्यादातर शेयर जो है वो लोग ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हैं और उसको सेल करना भी मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए दूसरे बंदे को खरीदना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके लिए कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. और दूसरा ये कि प्राइवेट इक्विटी जो है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जो कि अर्ली स्टेजेस में वो कंपनियां हो या जो रिस्कियर हो तो उस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं. तो इसलिए इसमें भी रिस्क बहुत ज़्यादा है. आगे बीरबल एक्सप्लेन करेंगे अगला टॉपिक. Bismillahirrahmanirrahim. Start with the glorious name of Almighty Allah, who is most beneficent. So today's my topic is about public equity. Public equity is simply when a company or an individual or an organization buys stocks or shares from the public sector company
we call it public equity. सिंपल मतलब ये है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इंडिविजुअल हो, स्टॉक खरीद करे या शेयर्स, दोनों सेम है, डेट सिक्योरिटी। कहीं किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी से अगर कोई स्टॉक या शेयर्स की ओनरशिप अपनी तरफ से ले रहा है तो उसको हम कहते हैं ये हमारी पब्लिक इक्विटी है। उसके बाद कंपनीज व्हिच आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जाहिर सी बात है उनकी स्टॉक एक्सचेंज जो हमारी मार्केट होती है उनपे उनकी ट्रेडेड होती रहती है। Investment made in publicly held companies. Investment can be made by retailer investors, institutional investors and mutual funds. ये मतलब सारे institutional investors भी आ जाते हैं, जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन का कहा, या कोई सिंपल इंडिविजुअल जाकर भी ओनरशिप अपनी पार्शली कितनी भी 10% ओनरशिप हो सकती है, जितने शेयर्स खरीद लेगा उतनी उसकी ओनरशिप हो जाएगी उसका पब्लिक सेक्टर कंपनी में। After that, next slide, after that we have advantages. There are many advantages of public sector company equity. So number one हमारा liquidity है, जैसे उमेर ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी हमारी लिक्विडिटी उसमें ज्यादा होती है, इधर पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है इसमें लिक्विडिटी रहता है। लिक्विडिटी का मकसद ये होता है कि कितनी आपकी जो स्टॉक है वो कितनी जल्दी में आपका कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये आपका लिक्विड मोस्ट लिक्विड ये पब्लिक सेक्टर जो इक्विटी होती है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन मतलब ये है कि आपको इसमें बिल्कुल एक किस्म की डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आपको मिल जाती है, कहाँ पे भी आप जाकर उसको डाइवर्स कर सकते हो, उसको आप बेच सकते हो या बाय कर सकते हो ये। और उसके बाद हमारी होती है ट्रांसपेरेंसी से मुराद ये होती है कि इसमें हमारा रिस्क बिल्कुल कम होता है। कहाँ पे भी मार्केट में आप जाएं, किसी भी स्टॉक मार्केट में चले जाएं, उधर आप इसको सेल कर सकते हैं, इसमें रिस्क बिल्कुल मिनिमाइज होता है पब्लिक सेक्टर कंपनी एज कम्पेयर टू हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। तो दैट इज फ्रॉम माय साइड। Ma'am, this topic would be covered by Vali Javed, but unfortunately he's not here due to some emergency, and I will explain the disadvantages of public equity. So the number one disadvantage is short-term market volatility. Public equity investments have short-term market volatility, which are influenced by various factors, which includes like economic conditions, investor sentiments, and geopolitical events. These fluctuations can lead to much significant price fluctuations or swings affecting the value of investments in the short term. Next one is limited influence. Public equity investors hold a minority stake in the company, which limits their ability, you can say, to influence their strategic decisions making. Shareholders' voting rights may provide some influence, but it is not as significant as the control the investors gets in the private equity firms. The lastly is pressure for short-term performance. Publicly traded companies often face pressure to deliver consistent short-term performance to meet market expectations. This pressure may hinder long-term strategic decision-making and investment initiatives with longer payback periods. So that was all our topic. Hopefully you all got that, and if someone has any question, you may ask, please. Thank you so much. Thank you so much, Alisher and the group members. If anyone has some question, पूछ सकते हैं. Otherwise, next group, please. We have left many groups. मैम हम प्रेजेंट कर दें. मैं अमार को मैं अमार को मैम अमार Okay, एक मिनट. Give me a minute. Group number कौन सा है ये अमार वाला? ग्रुप नंबर 5 मैम. Give me a minute. बना दिया है. इसको होस्ट है. Assalamu alaikum. Good afternoon, ladies and gentlemen. Myself, Ammar Tariq. Ammar, excuse me. हाँ जी.
अमार इसको वो स्टार्ट दूसरी करने दो, स्लाइड्स ओपन करें यार प्लीज। जो वहाब ने सेंड किए। भाव वाली थोड़ी में तो अब आपके वहाब, लिए ओपन कर लूंगा मैं present। नहीं नहीं, इनको इनके स्टार्टिंग इनको देना है। स्टार्ट तो मेरे पहले आप डिस्कस कर लेना आपने किस तरह से इसको कैरी आउट करना है, तब तक हम कोई दूसरा ग्रुप ले लेते हैं। टॉपिक मैम आप मुझे बना दें, अहमद को बना दें। मैम आप हमारी ले लें। स्टार्ट आप करते हैं भाई। अमार आप डिसाइड कर लें हाउ यू हैव टू हो मैनेज, गया हो तब गया तक ये अहमद अब्दुल्ला कर लेते हैं स्टार्ट। डिसाइड हो गया मैम, हमारा बता रहे हो गया। अच्छा ठीक है, चलिए फिर What is स्टार्ट करते हैं। derivative market? A derivative. First of all, I will tell you about that. What is derivative? A derivative is a financial contract that derives its value from an underlying assets. Derivative एक टाइप का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि वैल्यू ड्राइव करता है अंडरलाइंग एसेट। डेरिवेटिव को उसके अंडरलाइन एसेट जब उसको ट्रेड किया जाता है डेरिवेटिव को, तो उसकी जो वैल्यू होती है अमार प्रेडिक्ट करते हैं उसकी अंडरलाइन एसेट की फ्यूचर प्राइस को मूवमेंट को देखते हुए। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हो रही अमार। हर डेरिवेटिव की प्राइस उसके अंडरलाइन एसेट पे डिपेंड करती है। अगर डेरिवेटिव की प्राइस बढ़ेगी तो अगर अंडरलाइन डेरिवेटिव की अंडरलाइन एसेट की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डेरिवेटिव की प्राइस भी बढ़ेगी। अगर अंडरलाइन एसेट की प्राइस कम होगी तो उसके डेरिवेटिव की प्राइस भी कम होगी। डेरिवेटिव मार्केट में जब एक बायर एसेट बाय करता है तो वो फ्यूचर की डेट पे जिस डेट पे बाय करेगा उसकी प्राइस पहले से डिसाइड होती है। जो अंडरलाइंग एसेट होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में उनमें हम कमोडिटी स्टॉक इंटरेस्ट रेट बॉन्ड और करेंसीज आती हैं। डेरिवेटिव बेसिकली रिस्क को मैनेज या रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए यूज होते हैं और एक आदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो डेरिवेटिव मार्केट में होती है। उसके बाद बात करते हैं इनकी टाइप्स की। इसकी 4 टाइप्स है: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स। सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। For it is a customized contract in the sense that the term of the contract are agreed upon by the individual parties. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जो कि आपने प्राइस डिसाइड करनी होती है और फ्यूचर में उसको परफॉर्म करना होता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे दो पार्टीज हैं, क्लास में किसी दो बंदों का नाम ले लेता हूँ मैं, अली और मोइस। अली को फ्यूचर अली के पास $1000 है और जो मोइज है उसको फ्यूचर में 1 महीने के बाद डॉलर चाहिए और उसके 1 महीने के बाद पैसे आने। और अली ये समझता है कि शायद मुल्क के जो इलेक्शन आ रहे हैं हालात ठीक हो जाए, डॉलर की प्राइस नीचे गिर जाए। और मोइज समझ रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, शायद फ्यूचर में डॉलर की प्राइस ज्यादा हो जाए। तो वो आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो एक रेट तय कर देते हैं डॉलर का, फलाने 1 महीने बाद मैं तुमसे इस रेट पे डॉलर खरीदूंगा। ये कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये नॉन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को नॉन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये जब फ्यूचर में आपकी मर्जी, आप इसे परफॉर्म करो या ना परफॉर्म करो, और अगर नहीं भी परफॉर्म करोगे तो कोई आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई लीगल नोटिस आपको जारी नहीं कर सकता। अब दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट दानियाल इसको प्रेजेंट करेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मेरी है फ्यूचर फ्यूचर। फ्यूचर मेरा नहीं, मोइस का। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली फ्यूचर के रिलेटेड होता है, मतलब कि ये जो है रिस्क मिनिमाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर जैसे कि अगर मुझे बाहर के मुल्क जाना है और मुझे जो है पैसों की ज़रूरत है उस वक्त, तो और मुझे भी खतरा है कि बाद में जो है डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो मैं जो एक लीगल एंटिटी के साथ, मतलब किसी बैंक वगैरह के साथ जो जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन कराऊंगा कि जी मुझे जो है इस तारीख को इतनी प्राइस पे जो है एक प्राइस जो है सेट करके मैं उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा कि मुझे इस तारीख को इतने प्राइस पे एक पैसे चाहिए, तो आप मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें। ठीक। और ये लीगल एग्रीमेंट होता है, इस लीगल एग्रीमेंट होता है दोनों बायर्स और सेलर्स के दरमियान। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।
Anas, आ जाओ Anas. चलो. Assalamu alaikum everybody. Today we are going to deliver options here, a popular derivative instrument, in just 2 minutes, right? We'll cover the basic and give you the few examples to help you understand how they work. Let's get started. What are options? Basically, options are financial contracts that give the buyer the right, but not the obligation to buy or sell an underlying asset at a predetermined price. हमारे एक जगह रखो यार. Within the specified period. Let's take a look at a simple call option example. For example, imagine you believe the price of a company is XYZ, currently trading at a $50 price, will rise in the next month, and you can just buy a call option contract for $2, right? With a strike price of $55, which will expire in 1 month. If the stock price does indeed rise to, let's say, $60 within the next month, you can exercise the option, right? By paying the strike price of $55, you can purchase from the company's XYZ the stock of that on $55, and you can sell it to the market on $60, right? At a discounted price, then sell immediately, and the $5 will be your profit. So this is how the call option works. Now let's explore the put option, right? Suppose you expect the price of a commodity, let's say gold, currently trading at 1800 per ounce, to fall in the next 2 weeks. You can purchase a put option contract for $30, and with a strike price of 1750, expiring in 2 weeks, right? Our screen share on about. Okay, let's present. If you the price of the gold indeed drops, let's suppose 1700 within the 2 weeks, you can exercise the put option by paying the strike price of 1750. You can sell at the gold at a higher price than the market value, resulting in $50 per ounce. So in both examples, you can see that options provide opportunities for the potential profit. If you the predictions about the underlying assets price moves according to you, then it will be your profit. Otherwise, you cannot use the option. You have that opportunity, and also carries the risk, but less, including the potential loss of the premium paid for the options contract if the underlying asset price does not move as expected, right? So these are the options. These were the two types of options that we have discussed. So call options are used when we expect the price to rise, and put options are used when we anticipate the price decrease. So that's all from my side. Now Daniel will present you the swap contract. Assalamu alaikum. My name is Danial Adim. Hello everyone. Today the topic of my presentation is swap contract. First of all, we discuss the concept of swap contract, a derivative contract through which two parties exchange the cash flow or liability from two different financial institutions. So there are many types of swap. Number one, interest rate swap, commodity swap, and currency swap. So then we explain all these things in one example. For example, about swap. Example, two parties A and B need loan. They applied into different banks. A apply ABL and B apply HBL. ABL offer loan on CABR plus 3% floating rate, and HBL offer 10% fixed. CABR mean Karachi interbank offering rate, and CABR take loan from another bank is said that CABR 5%. Why bank not only give loan on CABR? Because National Bank took loan on CABR from HBL on 5%. So then National Bank will not give me loan on this CABR because he will take some of it profit. So he take CABR plus 3% its profit. Then CABR remain floating. Example, if Pakistan become financially good, bank want to
when people to invest more, then will decrease interest rate. So CABR decrease is future end. So and other side, fix is also risky. If CABR become 10%, then banks have no profit. B point of view is that he think that PM of Pakistan is making progress, so he had fixed it 10%. By progress, CABR is decreased, example 2%, so its 10% is very much high, so he will prefer CABR is favorable about than fix. A think that in news Pakistan is going for default, so CABR is increased to 50%. He will भाई prefer स्क्रीन fix. शेयर हो रही है यार, क्या कर B think A is benefit. Will A think B is benefit? So they will overcome this risk by exchange their contract. A get fixed and B get floating rate. So their mental thing, which is risk, is minimized. So this is all from my side. Any question? Kindly ask me. Any questions, everyone? थैंक यू सो मच आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। एक सवाल है मेरा अमार से। अमार, आर यू देयर? मैम वो जैसे he is busy with something. अच्छा, चलें आप ऐसे कोई भी बता दें मुझे। जैसे भी ma'am. आप लोगों ने बड़ा ही एक टफ सा टॉपिक चूज किया, पहले तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने इतनी हिम्मत की और इसको चूज कर लिया। पहले तो सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि हेजिंग है और अभी हर पार्टिसिपेंट जो भी अपना अपना पार्ट डिस्कस कर रहा था उसमें आपने बताया कि ऑप्शंस हैं, फिर ये स्वैप्स हैं, इसी तरह फॉरवर्ड इन फ्यूचर की बात की। मुझे बताएं कि व्हाट इज द रीजन कि एक ही सिचुएशन में एक ही कंट्री में दो पार्टीज हैं एंड बोथ आर थिंकिंग डिफरेंटली। वो दोनों डिफरेंट सोच रही हैं और फिर अपने अपने पर्सपेक्टिव में वो फिर उनका दे मैच अप ऑन अ सिंगल ट्रांजैक्शन जो कि फ्यूचर फॉरवर्ड जो भी हो सकती है, कंटिजेंट है या फॉरवर्ड कमिटमेंट है। तो ये डिफरेंट सोचने की एट द सेम प्लेस क्या वजह हो सकती है कि वो इस Ma'am, पॉइंट पे फिर आ जाएं, डेरिवेटिव्स को कर लें? वो तो तभी करेंगे ना जब एक की सोच ये है कि प्राइस अप जाएगी, एक की सोच है कि प्राइस विल गो डाउनवर्ड्स, एंड स्टिल दे आर कमिंग टुवर्ड्स दिस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? मैम ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है समटाइम्स पब्लिक कॉन्स्टेंट्स की वजह से होता है और समटाइम्स आपका जो है ना वो प्रोडक्ट्स मैच नहीं कर रहे होते जिसकी वजह से जिसके बेसिस के ऊपर वो डिसीजन ले रहे होते हैं, राइट। एक का अगर प्रोडक्ट जो जिस बेसिस पे उस चीज को प्रॉफिट हो रहा है वो अलग उस चीज पे थिंकिंग कर रहा है, दूसरा अलग उस चीज पे कर रहा है, तो दैट्स व्हाई दे हैव अ डिफरेंस ऑफ देयर ओपिनियंस। बिल्कुल ऐसे ये भी हो सकता है और ये बात भी हो सकती है मे बी शायद मैम, कि उनका जो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है वो फर्क हो मे बी। एग्जैक्टली मैम, मैम। एक तो ये भी हो सकता है, एक ये भी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्टली, यू हैव यूज्ड द राइट टर्म, वेरी गुड। ठीक हो गया, नेक्स्ट ग्रुप। जी मैम, हम हैं। आप मुझे बना दें वो होस्ट। जी मैंने आपको रोज बना दिया है, अब आप शेयर कर लें अभी स्लाइड्स। इसे तो, और आमना आप इधर ही हो? जी। ओके, आपका ग्रुप नंबर कौन सा है? ग्रुप नंबर 11। ओके ये मैं परमिशन अलाउ कर दूं। सो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है स्क्रीन शेयर, लेकिन स्लाइड्स नहीं आ रही, आपका मोबाइल स्क्रीन आ रही है आपकी। यस, हो गया। अब हो गया। हम स्लाइड्स आ गई हैं। जी आ गई। अच्छा, हमारा टॉपिक जो है वो कॉर्पोरेट बैंकिंग इकोसिस्टम है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आपको। मेरा नाम अहमद अब्दुल्ला है, मेरे टीम मेंबर्स है अमना तारिक और इज़्ज़त राज। और शुरू करते हैं पहले कि इकोसिस्टम है क्या और ये सारा इसके वर्ड का मतलब क्या होता है। इकोसिस्टम ये वो वाला इकोसिस्टम नहीं है जो दूसरा ग्रीन मतलब ग्रीन वाला होता है, एटमॉस्फेयर वाला। इसका मतलब होता है कि आप अपना एक बिजनेस का अपना एक वर्ल्ड बना लें जिसमें सारे बिजनेस एक दूसरे से कोलैबोरेट होकर काम करें। फॉर एग्जांपल समझ लें एक बिजनेस है
और बीच में एक डब्बा पड़ा है, पहले वो अलग अलग काम कर रहे हैं, फिर वो सारे बिजनेस आप एक डब्बे में डाल देते हैं और सारे मिलकर एक दूसरे से काम करते हैं। तो इस तरह होता क्या है बेसिकली, देखें सिनर्जी के नाम आपने सुना होगा कि अगर एक चीज़ है ना 1 और एक चीज़ 1 है तो वो 1 + 1 2 ही होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सिनर्जी कर लेते हैं एक दूसरे मिल के तो 1 + 1 3 हो जाता है। तो इससे काफ़ी आपको फ़ायदे मिल जाते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर जरी बात देखें, ये वर्ल्ड, इसमें कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, किसी चीज़ कोई परफेक्ट होती है, कोई चीज़ जो है वो खराब होती है। कोई भी चीज़, कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान टोटली परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। उससे कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स, सॉरी, ड्रॉबैक्स होते हैं किसी के। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका फॉर एग्जांपल कोई डिपार्टमेंट से इतना अच्छा नहीं चल रहा, और दूसरी कंपनी है, उसका एक डिपार्टमेंट, वेट अ मिनट, मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ की थोड़ी सी। सपोज करें आप एक बिजनेस कर रही हो और मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का, मैं बिजनेस ट्रांसपोर्ट, सॉरी, हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं फर्नीचर का, ठीक है। मेरे पास जो है ना वो अच्छी ट्रांसपोर्ट है, आपके पास अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्योंकि आप स्मॉल स्केल बिजनेस, आपके पास अच्छे ट्रक्स नहीं है, मेरे पास अच्छे ट्रक्स खड़े हैं। आप मेरे पास आती हैं, आप क्या कहती हैं कि आप ना आप फर्नीचर अच्छा बना सकती हैं, लेकिन आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। मैं फर्नीचर इतना अच्छा नहीं बना सकता, लेकिन मेरे पास ट्रांसपोर्ट अच्छी है। तो ऐसा करते हैं, क्यों ना हम साथ में भी काम करें और फर्नीचर आपका यूज़ हो और ट्रांसपोर्ट मेरी यूज़ हो, ठीक है। तो दोनों के जो प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व हो जाएंगे, और ज़्यादा एक अच्छी अप्रोच हो जाएगी, ज़्यादा दोनों का अच्छा प्रॉफिट होगा। फिर मोर ओवर, अब ये चीज़ जो है, ये इकोसिस्टम जो है, ये आपको समझ आ गई होगी कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, बेसिकली फॉर्मूला मिलकर काम। अब ये चीज़ हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट बैंकिंग में कैसे आती है। कॉर्पोरेट बैंकिंग में इकोसिस्टम ऐसे आता है कि बैंक्स जो हैं वो आपस में मिल के काम करें और एक अच्छा टेलर्ड सोल्यूशन निकालें कस्टमर को अच्छी सर्विस देने का। ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हो उनकी, और वे फोकस करें कि कस्टमर को बेसिकली चाहिए क्या, और सारे मिल के सर जोड़ें और एक कस्टमर को अच्छी सर्विस दें। इससे क्या हो सकता है कि बैंक्स जो हैं वो फिनटेक कंपनी से अपने से जोड़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर से जोड़ सकते हैं। फिर सॉरी, मैसेजेस आ रहे हैं बीच में। बेसिकली आपने जो बैंक्स हैं उनके पास अप्रोच यही होती है, एक्चुअली है नहीं, लेकिन होती ये है कि ये बात मैसेजेस आ सुनो रहे हैं। अहमद अब्दुल्ला, इसके ये नोटिफिकेशंस बंद करो। आपको पता है ना ये वी आर लाइव। ये मैम ये अच्छा बेहतरीन किस्म का टॉपिक है, वी वांट टू लिसन। मैं अभी ध्यान देना शुरू किया है तो वो अटेंशन डाइवर्ट हो रही है। ये मैम बस दोस्त है, मैं क्या करूँगा, वाईफाई भी नहीं ऑफ कर सकता मैं। अच्छा, एक मिनट, मुझे एक सोल्यूशन है, मैं एक चीज़ कर लूँ बस, ठीक है। अब चैट्स नहीं आएंगे। अच्छा ओके, आप अच्छा, स्टार्ट तो करें। बिल्कुल जी। फिर हो क्या सकता है कि आप एक ये पॉसिबिलिटी कि आप टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ अपने आप को मिला लें कि आपको अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें जिसके थ्रू आप वाइड रेंज ऑफ कस्टमर साथ रीच कर सकें, या फिर आप ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें जो कस्टमर के लिए ईजी है, जिसका ऑनलाइन बैंकिंग आ गई है और सब चीज़ें आ गई हैं, जैसे फिनटेक कंपनीज होती हैं, आपको पता ही हो। फिर आता है कि आप उन लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो जो कि जिनके साथ आपको पता चलता है कि ना, अगर आप उनसे मिल लो और वो आपके साथ मिल लें तो आप दोनों एक मिलकर एक अच्छी फर्म बना सकते हो, अच्छा एक सोल्यूशन बना सकते हो। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो उन्हें पता होता है कि अगर हम दोनों साथ मिल जाए ना, फॉर एग्जाम्पल सपोज करें आपकी एक गाड़ी है और मेरी एक गाड़ी है, आपके पास अच्छा इंजन है लेकिन आपके पास सीट्स अच्छी नहीं है, मेरे पास सीट्स अच्छी हैं आपके पास लेकिन इंजन अच्छा नहीं है। अगर हम साथ मिलकर काम कर लें तो हम एक अच्छी गाड़ी बना सकते हैं जिसमें हमारे पास अच्छा इंजन भी होगा, अच्छी कार भी होगी। बेसिकली बात यह है कि आप, इसका मतलब ये होता है इकोसिस्टम का कि आप कस्टमर के लिए सोल्यूशन निकालें। एक कंपनी किसी कभी भी सोल्यूशन निकाल सकती है कि कस्टमर का, अगर 2 से 3 ज़्यादा कंपनीज मिलें तो वो ज़रा एक अच्छी चीज़ बना सकती हैं। फिर मोर ओवर आप दूसरों दूसरों से उनकी स्ट्रेंथ लेवरेज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी लेवरेज कर सकते हो। लेवरेज का मतलब ये होता है कि आप किसी से कोई चीज़ लो फॉर योर ओन प्रॉफिट। अगर आपको पता है कि आप उनसे चीज़ लोगे और आपको प्रॉफिट होगा तो उससे लेवरेज कर सकते हैं। तो और फिर अभी तो ये इतना खैर इकोसिस्टम जो है वो इतना कॉमन नहीं हुआ, खासतौर पर पाकिस्तान में तो खैर इतना नहीं हुआ, लेकिन
जो यूरोप में देखा जाए, बाकी अमेरिका, बाकी आगे पीछे देखा जाए फॉरेन कंट्रीज में, तो ये काफ़ी चीज़ कॉमन होती जा रही है, क्योंकि अगर आप साथ बैठ के काम करें तो उसी में बरकत है। ठीक है ना, सीधी बात है। अलग-अलग काम करेंगे उसमें वो बात नहीं बनने वाली, साथ मिलकर काम करेंगे बात बनेगी। और जो 80% ऑफ जो एग्जीक्यूटिव्स हैं यहाँ डाटा दिया हुआ है, वो ये बिलीव करते हैं कि अब जो नेक्स्ट 5 ईयर में जो ग्रोथ होनी है बिजनेस की, वो उससे जो की ड्राइवर है वो क्या है, इकोसिस्टम। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये आपको इज्जत राज बताएगी। Assalamu alaikum everyone. The topic of my presentation is the benefits of इज्जत, ecosystem. मेरी आवाज आ रही है? जी आप ऑडिबल हैं, आपकी आवाज आ रही है। इज्जत, Okay. The topic of my presentation is the benefits of ecosystem for इज्जत आपकी corporate. आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है। इज़्ज़त, यू कंटिन्यू। ओके मैम। तो इसके बेनिफिट्स में ये होता है कि इनका इससे क्या होता है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ रही होती है, क्योंकि वो मेन उनका गोल होता है कि मतलब डिफरेंट पार्टीज यहाँ पे आके कोलैबोरेट कर रही होती हैं, तो वो ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, वो अच्छे तरीके से अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके कस्टमर्स के एक्सपीरियंस अच्छे हो रहे होते हैं। उसके अलावा इसमें ये होता है कि ये इनको न्यू मार्केट में असेस मिल जाता है। वो इस तरह के यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ये होता है कि डिफरेंट पार्टीज यहाँ पे काम कर रही होती हैं और वो लेवरेज करती हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से वो कस्टमर्स को ज्यादा अच्छे तरीके से सर्व कर रही होती है। जैसे फाइनटेक कंपनीज हैं, उनके पास वो काफी मतलब ऐसे एरियाज में एक्सपर्टीज होती है जिसमें बैंक नहीं होते, तो जब बैंक इनके साथ कोलैबोरेट करते हैं तो फिर बैंक को असेस मिल जाता है न्यू मार्केट में जाने का, न्यू कस्टमर्स के साथ न्यू कस्टमर तक अप्रोच मिल जाती है। उसके अलावा इसका ये बेनिफिट होता है कि ये न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज के इनोवेशन कर रहे होते हैं। वो इस तरह होता है कि यहाँ पे डिफरेंट जब पार्टीज आती हैं, उनके डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट गोल्स होते हैं। वो जब एक चीज पे मिल के काम करते हैं तो वो उनका मेन फोकस होता है कि वो उनमें एक कंपटीशन लग जाता है, तो वो एक दूसरे से बढ़ के मतलब चीजें और अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज देने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से ये होता है कि वो न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज दे रहे होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा उनको, जिसमें कस्टमर्स की डिमांड्स और नीड्स को देखा जा रहा होता है और कस्टमर्स उससे मतलब सेटिस्फाई हो रहे होते हैं, और इस तरह फिर उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज इनोवेट हो रही होती है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। अब आता है चैलेंजेस ऑफ इकोसिस्टम फॉर कॉर्पोरेट बैंकिंग। अब इसको जिस तरह इसके बेनिफिट्स हैं, इस तरह इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। इसमें ये होता है कि इसको सबसे बड़ा मेन चैलेंज आता है कोलैबोरेशन में। अब चूंकि यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज आके कोलैबोरेट कर रही होती है, तो उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं, तो उनको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में और एक दूसरे के साथ काम करने में काफी इशू आ रहा होता है, जिसकी वजह से उनके कोलैबोरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं, उनको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग कोलैबोरेशन। उसके अलावा ये होता है कि इसमें रूल्स एंड इसमें जो रेगुलेशंस होती हैं ना, वो बहुत हाईली होती हैं। तो जाहिर सी बात है वो रेगुलेशन कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकती है, तो जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसके अलावा आता है टेक्नोलॉजी। अब डिफरेंट पार्टीज यहाँ पे आके अपने उस टेक्नोलॉजी को एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि ये वो जैसे कि फाइनटेक कंपनीज, ये वो कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही होती है किसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। तो जब यहाँ पे पार्टीज आके कोलैबोरेट करती हैं, तो वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को एंजॉय कर रही होती हैं, पर कुछ टेक्नोलॉजीज उनके लिए अच्छी साबित होती हैं और कुछ बुरी होती हैं, तो इसके लिए ये भी उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। अब चूंकि हर कंपनी का जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो उसकी सिक्योरिटी होती है, तो जाहिर सी बात है इसमें सिक्योरिटी के बहुत कम चांसेस होते हैं। जैसे वो अगर कोई ऐप बनाते हैं, वहां पे अब कंपनीज अपना डाटा डाल देती हैं, तो वहाँ अगर वो हैक हो जाता है तो उनकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है उन्हें, मतलब अपना सिस्टम इतना वो अच्छा बनाना पड़ता है ताकि उनकी सिक्योरिटी रहे, किसी का डाटा वगैरह इंफॉर्मेशन लीक ना हो। उसके अलावा एक उसका लास्ट चैलेंज आता है डाटा मैनेजमेंट। अब चूंकि यहाँ पे जैसे कि बताया गया कि बहुत सारी कंपनीज आके और पार्टीज आके यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो उससे ये होता है कि डाटा बहुत हाईली अमाउंट में आ जाता है, जिसको मैनेज करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, और ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है इसमें। थैंक्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। नाउ आमना विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक।
अस्सलाम वालेकुम। मैम आवाज आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन बहुत बहुत ही हल्की है आवाज। थोड़ा सा अगर ऊंचा बोलेंगी तो अच्छा समझ आ जाएगा। Okay, ma'am. The अब ठीक topic है। of the topic of technology and ecosystem. अब इसमें हम क्या बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है। अब जो टेक्नोलॉजी होती है ना, वो कॉर्पोरेट बैंकिंग सेक्टर में, इसमें क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी आप कंपनीज और स्टेक होल्डर आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। कस्टमर फॉर एग्जांपल एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसके थ्रू ना सर्विसेज शेयर कर रहे होते हैं विद अदर कंपनीज। और एक होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये इनेबल करती है सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। कि हमारी जो नजर आ रही होती है कि हमारे पैसा कहाँ पर जा रहा है या क्या ट्रांजैक्शन हो रही है हमारी दूसरी पार्टी से। ये नहीं कि कोई बीच में से कोई फ्रॉड वगैरह हो जाए। अब लाइक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड बिग, जो कि हेल्प करती हैं बैंक को अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज। उससे ये क्या होता है कि वो अपने थ्रू टेक्नोलॉजीज को मैनेज कर लेते हैं। कि मतलब हमें पता होता है कि मतलब हमने अपना रिस्क कैसे, क्या होता है कि टेक्नोलॉजी प्लेज एन एसेंशियल रोल फॉर बैंक want to stay competitive and relevant in an ecosystem world. आमना की आवाज नहीं आ रही। अहमद, हेलो मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आई है आवाज। ये खत्म हो गई आपकी प्रेजेंटेशन या अभी और है? अब अभी कोई स्लाइड और है डिस्कस करने वाली? ये प्लीज अपनी जो स्क्रीन है उसको चेंज करो, ध्यान दो उस तरह। हेलो जी जी। मैम, आपको आवाज आ रही है? अभी आई है आवाज। कंक्लूजन में हमारे पास ये होता है कि ट्रांसफॉर्मिंग द कॉर्पोरेट बैंकिंग सेक्टर। इसमें बस यही होता है कि हमारा जो इकोसिस्टम होता है ना, इससे आपको, जब आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ, काफ़ी न्यू चीज़ें इन्वेंट कर लेते हैं। और ये होता है कि आपके चाहते हैं या फिर वो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, जैसे कि वो आपके जिसने ऑलरेडी बता दिया। तो हमारे पास ये होता है कि अगर हम अच्छी एक कोलैबोरेशन, हमारी जो बैंक की एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा, हम मतलब काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन ला रहे होते हैं अपने बिजनेस में। That's all. Thank you. थैंक यू सो मच। चलिए जी, नेक्स्ट रूम आयशा को मैं बना देती हूँ होस्ट इसी में। Excuse me, ma'am, can I present now? आपको किसी ग्रुप के साथ है या इंडिविजुअली आपने प्रेजेंट करना? मैम ग्रुप था लेकिन वो इंटरनेट इशू की वजह से सिर्फ मैं ही रह गया हूँ अपना सेपरेट। चलो शेयर कर लो स्लाइड्स पर। देखो ये हो सकती है मैम स्लाइड इट्स शेयर आवर हो। टर्न राइट नाउ। मैम अभी हमारी है। अच्छा, ये एक ही मेंबर है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली 3 to 4 minutes प्लीज। ओके
ये वहाब नाम है ना आपका? यस मैम। ओके, मैं आपको ना को होस्ट सुनाती हूँ, आप अपनी स्लाइड शेयर करें। चलिए शेयर कर लें, जरा देखें हो रही है। अब शेयर हो रही है स्लाइड्स आपकी? नहीं, अस्सलाम हाँ, वालेकुम। My name अब is शेयर Abdul हो Wahab Kaisar. जी जी। My group members are Elsa Ali, Muhammad Ali Hasnain, Muhammad Ahmad, and Abdul Wahab Kaisar. So I'll present my topic, that is swaps. First of all, we will start with the definition of swaps. Swaps are derivative contracts that involve the exchange of cash flows between two parties based on predetermined terms. They are widely used in the financial markets to manage risk, hedge positions, and achieve specific objectives. स्वैप्स फोर टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव में से एक टाइप है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो रिस्क मैनेज करता है। सेकेंडली ये पोजीशन को हैज करने में काम आता है, मतलब कि इसमें भी सर्टेनली यही आ जाता है कि आपका रिस्क मैनेज हो जाता है। एंड द थर्ड वन इज अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। Moving towards the types of swaps, there are mainly two types of swaps: commodity swaps and credit default swaps. Commodity swaps involve the exchange of cash flows based on the price movements of underlying commodities such as oil, natural gas, or agricultural products. And it is used by the commodity producers, consumers, and investors to hedge against the price fluctuations and manage exposure. The second one is credit default swaps. They provide protection against credit events such as defaults or bankruptcies of specific reference entities or debt instruments. It is used by investors and institutions to hedge credit risks or speculate on the creditworthiness of companies or sovereigns. Benefits of swaps: there are two benefits. The first one is risk management, and the second one is the second one customization. Swaps help manage various risks including interest rate, currency, commodity and credit risks. स्वैप जो है फोर टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट करता है। नंबर वन, इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है, जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट्स करते हैं बैंक्स के अप एंड डाउन। सेकंड वन, करेंसीज, जो डॉलर टू पीकेआर हो गया या डॉलर टू इंडियन रुपीज एक्सेट्रा, इस तरह। कमोडिटीज, जो गोल्ड सिल्वर वगैरह होते हैं। एंड द थर्ड लास्ट वन इज क्रेडिट रिस्क। And the second one is customization. Swaps can be tailored to meet specific needs, allowing parties to align the contract terms with their objectives. Moving towards the next slide, what are the market participants which use derivatives such as swaps and others? The first one is financial institutions. Financial institutions such as your banks and the other financial intermediaries, they play a vital and key role in facilitating swap transactions and providing liquidity. Second one are the corporations. They use the swaps to manage associated interest rates, currencies, commodities, etc. And the third one, institutional investors. And the fourth one are speculators and arbitrageurs. They use swaps to capitalize on market inefficiencies, price differentiations, and anticipated changes in the market conditions. Arbitrageurs are those which buy the currency from one market and sell it in the other and take their profits aside. Importance of derivative market. First one, risk management. Risk management, derivatives are powerful risk management tools that allow markets participants to hedge or mitigate various types of risks. Second one is price discovery. The derivative markets help the efficient discovery of asset prices. As we all know that their prices are influenced by market forces such as supply and demand and expectations of future market movements. The third one is market liquidity. Derivatives enhance market liquidity by attracting a wide range of participants, including speculators and arbitrageurs,
and all one I have discussed in the previous slide. Capital efficiency. Derivatives provide a means of efficiently allocate of capital and manage the financial resources. They allow the participants to gain exposure to various asset classes and markets without directing owning the assets. And the last one is the investment opportunities. The derivative market offers opportunities for investment. Investors can take positions based on their expectations of market movement, aiming to profit from price fluctuations. Investors can use derivatives to gain exposure to different asset classes and various investment strategies for their future. Thank you. That's all from my side. Thank you so much, Wahab. It was a good presentation. Next group आ जाएं. Bushra Iqbal हैं, group number 12. This will be the last group for today. Inshallah हम इसका एक makeup arrange करते हैं. उसके बाद जो बाकी 5 groups रह गए हैं उनकी हम फिर next session में कर लेंगे. ठीक है? Assalamu alaikum everyone. My name is Bushra Iqbal and my group member name is Asma Aruj. So today we are presenting you the topic which is conflict of interest in investment banking. Firstly, we will talk about the definition of conflict. Next slide. Conflict means that a serious disagreement or argument between two parties about opinions, thoughts, or principles. For example, a poor communication, it is the most common conflict in the workplace. The next one is conflict of interest in investment banks. Most investment banks know that a conflict of interest, it having more than one interest in a transaction, and it may result in the bank being unable to provide neutral financial advice or fairly meet its legal obligations. The next one is causes conflicts of interest. Here are some of the common ways in which conflicts of interest commonly happen. Sometimes investment banks may themselves be a party to a transaction. It controls several firms and it is likely one of their own firms may be dealing to their clients. The next one is investment banks may have a stake in the company whose merger of acquisition they are advising. It could be related to debt or equity, and having a stake would skew their priorities and would not be able to advise the firm objectively. And the third one is an investment banker may be privy to certain information about the firm. It has not come out in the public domain as of now, wherein they could benefit at the expense of their clients. Fourth one is an investment bank may have multiple clients who have an interest in a particular transaction. It would be impossible for the investment bank to manage their interest. So we will discuss about the problems in investment banking. One problem is underwriting problem. Underwriting underwriting means that your lender verifies your income, assets, debt, and property details in order to issue final approval for your loan. Underwriting services are provided by some financial institutions such as banks, insurance companies, and investment banks, where they guarantee payment in case of damage or financial loss and accept the risk of liability arising of such guarantee. Underwriting problem in investment banks. Investment banks are persuaded to distort their research to please the underwriting department of their bank, and the investor use the financial decisions and diminishes the efficiency of securities of markets. The next one problem is spinning. Spinning basically means that when investment banks allocate underpriced shares of newly issued stock to executives of other companies in order to them to use that investment banks. This causes a rise in the cost of capital for the firm and hinders the efficiency of the capital market. So I have done my side. Now Asma will further discuss the topic. Assalamu alaikum everyone. This is me Asma Aruj.
Today, my topic of presentation is avoiding conflict of interest. As Kusha described it earlier, what is conflict of interest? So here we discuss the ways through which we avoid conflict of interest. So conflict of interest, it is basically the duty of investment bank to disclose any potential conflict of interest they might have. Basically, they have to disclose the information about the situation in which they are indulged. They have to disclose the information. Or second one is providing financial advisory service. Financial advisory services are basically, they are the, you can say, they are the risk management or insurance planners, tax planning, retirement planning, portfolio management, cash flow analysis. They are basically the financial advisors. Then we have making equity investment, providing arranging finance. We have to arrange the finance according to the situation, or advise our client about the future, or about the conflict of interest, and how they avoid conflict of interest. Next, please. Then we have the examples of conflict of interest. Basically, they are the example that are arise by investment banks like Goldman Sachs, Kotak Finance, SBI. So here we take the example of Goldman Sachs. Goldman Sachs, basically, the advice issued by Goldman Sachs that it was bullish on mortgage-backed securities. Later information showed that Goldman Sachs had placed several large bets against the housing market on its accounts. So there are the ways through which they have raised their conflict of interest. So we have different techniques or different, you can say, different techniques through which we can overcome through the problem of conflict of interest. Next, please. So problem solving techniques. First one is intellect. We have to think or understand what the problem is and how we can overcome through it. Then we have to be disciplined. Discipline mean you have to be disciplined and follow each and every rule of an organization through which you can overcome through the problem. The creativity, you have to be creative, means you have to creative in order to understand the situation and generate a new idea that will help you to overcome through that situation. Then we have open-mindedness, means you have to think out of box, or you have to think broad-mindedness about the situation, or about the problem, or how can you overcome through it. Then we have a relationship building skills. It means you have the ability or capability to make a relationship within the organization, or organization of different members, which help you to overcome through that problem. Thank you so much. This is from my side. If you have any question, you may ask. थैंक यू सो मच। आपके 2 मेंबर्स हैं बस, और इसके अलावा और कोई नहीं? नो मैम। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंटेशन। टॉपिक वाज गुड, प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी। तो इसको अब अभी हम कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होगी, एक सेशन और होगा जिसमें जो रिमेनिंग ग्रुप्स रह गए हैं उनकी हम प्रेजेंटेशन सुनेंगे। तो आज के लिए अभी हम एंड करते हैं इसको, ठीक है।